हेलो गाइस, इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं अपना नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सो पहले तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं, देन इसके बारे में क्या क्या चीजें। नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प, नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प, ठीक है। सो नॉन इन्वर्टिंग जो ऑप एम्प है, इसमें अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं, इनपुट इज अप्लाइड, इनपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड at input voltage is applied at positive terminal and negative terminal is grounded, ठीक है। तो नेगेटिव टर्मिनल इज ग्राउंडेड। नाउ अगर डायग्राम देखें तो डायग्राम देखते हैं क्या है। सो इट इज minus, it is plus. Now this terminal is connected to a source that is of Vi. Then this terminal is grounded, this terminal is grounded, this is R1 and the feedback is connected to like this, and this is your output, so it is RF. Now according to the virtual short concept, now second point में देखते हैं, according to the virtual short concept, if this point voltage is Vi, then this point voltage is also Vi. Clear है यहाँ तक? And this point is at 0 volt. Clear है? So the gain of this op amp is what? So if you apply the KCL, then we have the gain like Vi minus 0 divided by R1. Clear है? Then Vi minus, this is V0 upon RF, that is equals to 0. RF equals to 0 according to the KCL equation. Then we have Vi upon R1 plus Vi upon RF, that is equals to V0 upon RF. Now Vi common from this side, 1 upon R1 plus 1 upon RF, that is equals to V0 upon RF. Now gain is what? V0 upon Vi. So V0 upon by Vi is gain, and RF is sending to this side, then it is 1 plus RF upon R1. Clear? So the gain is equals to output voltage upon input voltage, that is equals to 1 plus RF upon R1. So this is the gain in case of what? Your non-inverting op amp. Now in the third point, if you see, the V0 is equals to V0, the V0 equals to 1 plus RF upon R1 Vi. So if you treat as it A, then V0 equals to A Vi. Is it okay? So here the output voltage is positive. That means non-inverting op amp behaves as non-inverting op amp gives 0/360 degree phase shift. That means no phase shift between the input and output. Clear है यहाँ तक? Now in the next point, fourth point, the input resistance. Now if you see, these two points are at the same potential, then if you apply the KVL, then we have according to Ohm's law, I equals to B by R, and R of I equals to Bi upon I of I. Since the input current to that op amp is 0, then the input resistance in case of non-inverting mode is infinite, but the output resistance is same as in case of what? The inverting op amp. So input resistance is infinite and output resistance is 0. Clear है? Now non-inverting op amp की definition clear है, gain clear है,
फेज शिफ्ट कितना देता है? 360 डिग्री या 0 डिग्री फेज शिफ्ट देता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो कितना होता है? 0 होता है। अब इनपुट रेजिस्टेंस पता है, आउटपुट रेजिस्टेंस पता है, गेन पता है मेरे को, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं और इसमें किस टाइप की फीडबैक होती है वो लिखते हैं और इसका एप्लीकेशन पार्ट देख लेते हैं, जिससे कि हमारा जो लगभग नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प है, जैसा कि हमने इन्वर्टिंग ऑप एम्प पढ़ा है, उसी के सिमिलर पॉइंट्स हो जाए। तो लेते हैं 5th पॉइंट से इक्विवेलेंट सर्किट एंड टाइप्स ऑफ फीडबैक एंड एप्लीकेशन। नाउ 5th पॉइंट समझते हैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट से। तो इक्विवेलेंट सर्किट जो है नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प का क्या होता है देखते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट ना, इक्विवेलेंट सर्किट को अगर देखें तो इनपुट रेजिस्टेंस जो था वो इसका इनफाइनाइट था और जो आउटपुट रेजिस्टेंस था वो क्या था? आपका 0 था। और अगर हम गेन की बात करें, V नॉट अपॉन VI दैट इज A दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस RF अपॉन R1। सो V नॉट इज इक्वल्स टू A VI। क्लियर है? तो ड्रॉ करते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस कितना है आपका? इनफाइनाइट है, दैट मींस दिस सर्किट इज ओपन सर्किट, सो इट इज VI एंड देन I ऑफ I इज 0, दैट्स व्हाई द R इनपुट इज इनफाइनाइट। ठीक है? नाउ एट द आउटपुट the output is depend upon the input voltage, so it is called voltage controlled voltage source. So we are showing the output as a controlled voltage source, so it is a VI and output resistance is 0, so output resistance is 0, so it is like shorted, then this is your output. Now if you apply the KVL, then output is just AVI, according to the KVL equation. Is it okay? So this is your equivalent circuit for non-inverting op amp. Now in the next part, 6th point, the type of feedback is what? In inverting mode op amp we use voltage shunt feedback, but here we use voltage series feedback. अगर ये ऑप्शन में नहीं है then you use voltage feedback. It is not, it is double E, feedback. Okay, then in the 7th point, its application. Now the first application of non-inverting op amp is what? Voltage follower. Now voltage follower क्या चीज होती है, शॉर्ट में बता देता हूँ, उसको हम अलग से लेक्चर में भी कवर अप करेंगे। सो अगर हम बात करें, V नॉट इक्वल टू होता था V नॉट अपॉन VI इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R1। नाउ इफ यू हैव R1 0, R1 infinite, if you take R1 is as infinite, then what happen? Then something by infinite is 0, so 1 plus 0 is 1, so the gain, the output is just equals to VI. Clear? Now if RF is shorted, the feedback resistance is RF is 0, it is shorted, then the V naught is also equals to VI. So a voltage follower is that circuit that will follow the input to voltage and gives you the unity gain. That's why the voltage follower is also called as unity gain amplifier. ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन तो इसी का यही है, नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प मोड का। दूसरा एप्लीकेशन है एवरेजिंग एम्पलीफायर, में। क्लियर है? तो जो नॉन इन्वर्टिंग और जो इन्वर्टिंग मोड ऑप एम्प है वो दोनों आपके समाप्त हो गए हैं। न्यूमेरिकल कर लेते हैं इन पर, जिससे कि जो अभी तक पढ़ा है उसको कैसे अप्लाई करना है वो हम लोग सीख जाएं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल पार्ट।